Students, how are you all? Welcome to our online classes. So in this video we'll be starting with the chapter number 5, quality. So let's begin. Before you read, means before reading this chapter, we will be reading these 4-5 lines given above. Let's read. Can a shoemaker be called an artist? So the first beginning of this chapter is a question. Can you think a shoemaker, the person who makes shoes, can be called as artist? आप उस shoemaker को artist बुला सकते हो. And what do you mean by artist? An artist is one who creates new art like painting, sculptures means मूर्तियाँ या कुछ ऐसी कोई न्यू चीज़ क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ स्किल्स. इट माइट बी म्यूज़िक, इट माइट बी राइटिंग्स, कि अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ या सुंदर पोएम्स लिख रही हूँ या एक अच्छा म्यूज़िक लिख रही हूँ या क्रिएट कर रही हूँ विद माई स्किल्स, तो उन सबको क्या कहते हैं? आर्टिस्ट. इवन जैसे अपन देखते हैं कि एक्टर्स को भी कहते हैं आर्टिस्ट. सो द वन हु यूज स्किल टू क्रिएट समथिंग न्यू, और यू कैन से कि ऐसी स्किल से कि कुछ भी अगर कोई चीज़ होती है या उसको न्यू में बदल दो या उसको मॉडिफाई कर दो तो उसको आर्टिस्ट कहते हैं. तो सेम क्वेश्चन ऑथर पूछ रहा है कि क्या शू मेकर को अपन आर्टिस्ट कह सकते हैं. सो आंसर इज yes if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and same respect for it too. तो यहाँ पे शू मेकर के लिए क्या करें कि येस उसको आर्टिस्ट कह सकते हैं, बट उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसकी स्किल्स उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी दूसरी आर्टिस्ट की होनी चाहिए. उसका जो प्राइड है मीन्स ही शुड बी हैप्पी, ही शुड बी प्राउड ऑफ हिज ट्रेड मीन्स वर्क, कि जो भी उसका काम है या जो उसकी आर्ट है उसके ऊपर उसका जो प्राइड है वो होना चाहिए. एंड दूसरे लोगों को भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस आर्टिस्ट की, तब अपन उसको या उस पर्सन की, तब उस पर्सन को अपन आर्टिस्ट कह सकते हैं. मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read the story to see how he devotes his life to his art. So Mr. Gessler is a shoemaker and he is a German. So it is a story taken from a German, ठीक है, that a person is German living in, settled means living in London. The person is from Germany but he is living in London and he is a perfect artist. तो वो जो आर्टिस्ट है अपनी आर्ट के लिए वो कह रहे हैं कि ही डिवोट्स हिज लाइफ, मीन्स पूरा समर्पण कर दिया उस आर्ट के लिए अपनी लाइफ को. लेट्स सी हाउ. सो द चैप्टर नेम इज क्वालिटी. सो व्हाई क्वालिटी विल बी सीइंग इन फर्दर इन द चैप्टर, बट आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि क्वालिटी कैसे, कि स्किल्स जो भी होती हैं या जो आर्ट होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट या ब्यूटीफुल लुक देंगी, और या फिर उसका जो ट्रू वैल्यू है वो कैसे पता चलेगी? विद द क्वालिटी. सो लेट्स बिगिन. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज. सो यहाँ पे आई रेफर किसको कर रहा है? ऑथर. यहाँ ऑथर बता रहा है कि आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई फादर्स बूट्स. सो डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड फादर्स बूट. तो वो कह रहा है कि जब से मैं छोटा था मैं इस पर्सन को, इस शू मेकर को जानता था. एक्सट्रीम यूथ मीन्स जब मैं छोटा होता था, एंड एट दैट टाइम ही यूज टू मेक बूट्स फॉर माई फादर. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. So now he tells that shoemaker lives with his elder brother and their shop was in the fashionable part. एक ऐसी स्ट्रीट जो उस समय रिनाउंड थी, जो फैशनेबल अगर कहा जाए उस स्ट्रीट में उनकी एक छोटी सी शॉप होती थी. The shop had a certain quiet distinctions means
एंड क्वाइट हेयर मीन्स चुप नहीं, क्वाइट मीन्स स्मॉल, डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंस, कुछ बहुत छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस होता था दूसरी शॉप्स के कंपैरेटिव में। क्या डिफरेंस होता था? लेट्स सी फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट other than the name of Gessler brother, and in the window a few pair of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. So he tells the description of shop कि वो कैसे different थी दूसरी शॉप से, that it doesn't have any signboard, any lights, जैसे अपन कोई देखते हैं कि शॉप्स को करने के लिए there are board डिफरेंट साइन बोर्ड्स, डिफरेंट लाइट, डिफरेंट डेकोरेशन, बट उनकी बोर्ड पे सिर्फ एक ही नेम लिखा हुआ था, गेस्लर ब्रदर, और उस विंडो और उसकी सिर्फ एक ही विंडो थी जिसमें कुछ पेयर ऑफ शूज़ डिस्प्लेड थे। एंड ही दैट दीज शू कीपर मीन्स गेस्लर ब्रदर्स मेड ओनली दोज बूट्स दैट आर वर ऑर्डर्ड, मीन्स वो दूसरे कोई और बूट्स नहीं बनाते थे, सिर्फ जो उनको ऑर्डर मिलता था वही बूट्स बनाते थे। एंड दे मेड इट सो वेरी वेल दैट इट नेवर फेल्ड टू फिट, मीन्स नो वन कंप्लेन्स अबाउट देयर मेकिंग ऑफ बूट्स। शूज़ आर स्मॉल, बूट्स आर लाइक बिगर देन बूट्स, उनकी जो शूज़ की जो नेक है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, दैट आर कॉल्ड बूट्स। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ। टू मेक बूट्स, such boot as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful. So author is telling, when I was young that the shoes I seemed means जो उनको boots को जो देख के वो लगता था वो हमेशा ही सोचते थे it was mysterious yet wonderful, that how shoes can be so wonderfully made that they never fail to fit. Even the quality of the boots were so good, but it was a mystery to the author that how these boots are so wonderfully made. So he was thinking from the childhood till now, like it is written here, and still seems to me, means from till youth till date, it was mystery for him. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't awfully hard to do, Mr. Gessler? So author is telling that he remembered his childhood days when he shyly means शर्मा के मिस्टर गेस्लर से उसने क्वेश्चन पूछा कि isn't it hard to make boots? So let's see what Mr. Gessler answer. And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. तो लास्ट में क्या लिखा है? ID means on your right hand side means it is an art. तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज क्यों है? बिकॉज ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। तो अपन चैप्टर में ऐसे काफ़ी लाइन्स देखेंगे जो कि उसमें लिखा हुआ इस तरीके से है कि दैट मिस्टर गेस्लर इज स्पीकिंग इन जर्मन एक्सेंट, बट जो मीनिंग है वो अपन को आपके कॉर्नर राइट हैंड साइड कॉर्नर में मीनिंग मिल जाएगा, इड इन एन आर्ट। तो आर्ट की जगह आर्ट लिखा हुआ है, तो दिस मीन इट इज़ एन आर्ट। मिस्टर गेस्लर रिप्लाइड टू दैट young author that it is an art, so it is not hard for me. Next paragraph. It was not possible to go him very often. His boot lasted terribly. Having something. Okay, so this is the shop that की simple shop है and ऊपर सिर्फ गेस्लर ब्रदर लिखा है. So I'll explain you first line. We'll be switching to next paragraph lately. So it is not possible to go him very often means जो भी उसके customers थे वो very often visit नहीं करते, means आए दिन वहाँ जाते नहीं थे, because that boot he made were lasted terribly. Lasted terribly means lasted very long. जो उनकी क्वालिटी थी वो अच्छी होती थी, जो स्टिचेस होती थी वो अच्छी होती थी कि कभी भी वो ख़राब नहीं होते थे. सो जो उसके कस्टमर्स थे हमेशा जाते नहीं थे.
Let's continue from the paragraph. Having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. So means beyond means कुछ ज़्यादा, कि कुछ ऐसा था उन बूट्स में जो कि दूसरे बूट से डिफरेंट था. Some essence of boot means something, some material or something was there that is stitched into them. means अपन जैसे कहते हैं कि अपन की क्वालिटीज़ अपने साथ चलेंगी, तो इट डजेंट मीन्स चलना. सिमिलरली कि जब वो बूट स्टिच थे तो देर वॉज समथिंग, माइट बी क्वालिटीज, माइट बी स्किल, माइट बी आर्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होता था जो कि वो दूसरों से अलग होता था. बियॉन्ड द टेम्पररी मीन्स दूसरे बूट से डिफरेंट होता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली as one enters a church and sitting on a single wooden chair waited. So now author went in the same shop and he was saying that waiting in that shop, he is referring that he is sitting in the church, like just how church is quiet, no one generally visits, मतलब रश नहीं होता रोज के दिनों में. तो he was waiting on a wooden chair. And now what he see from the paragraph from here, a glutted sound, a glutted sound, and a tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stair, and he would stand before no one without a coat, a little bent in a leather apron with sleeves turned black, blinking as if awkward, awakened from some dreams of boots. So now he is explaining the view that of that shoemaker, मिस्टर गेस्लर का जो अपीयरेंस है वो कैसे बता रहा है कि एज ही वॉज वेटिंग समवन इज कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर एंड स्लीपर्स की कैसे आवाज़ आती है, टिप टैप की. सो ही इज सेइंग दैट व्हेन ही केम डाउन ही वॉज विदाउट अ कोट एंड लिटिल बेंट मीन्स झुके हुए थे. लाइक इन ओल्ड एज जो अपन की बैक्स हैं वो झुक जाती है, तो वो ये बता रहे हैं कि ही इज़ ओल्ड, ही इज़ बेंट, ही इज़ वेयरिंग एन एप्रन, जो उनकी स्लीव्स हैं वो ब्लैक हो गई है. माइट बी ही इज़ वर्किंग सो मच कि जो उसकी स्लीव्स थी मिस्टर गेस्लर की वो ब्लैक हो गई थी. एंड ही वॉज ब्लिंकिंग हिज आइज, जैसे कि अगर आपको ड्रीम्स में से उठा देते तो वी आर कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग. तो वो ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा उसको लगा, द नरेटर को लगा, कि उसको ऐसा लगा कि मिस्टर गेस्लर को उनके ड्रीम्स जो थे, बूट्स की जो ड्रीम्स है उससे उठा दिया. तो वो ऐसा अपीयर हो रहा था नरेटर को. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ अ रशियन लेदर बूट्स. So now the author is giving him order to make a new boot. So what he replies, let's see. Without a word, he would leave me retiring when hence he came, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. So now, as soon as he ordered his making of new boots, Mr. Gessler turned away, just like he just went to the another part of the shop, and narrator continues to wait. And while he was waiting, he is saying that I can smell the leather. Incense of his trade means, जो ट्रेड मीन्स वर्क, तो उसका वर्क क्या था, शूज़. तो शूज़ में बेसिकली यू विल सी लेदर, और जो भी मटेरियल होगा उस शॉप के अंदर वो स्मेल आएगी. तो वो कह रहा है कि मैं वो सारी जो लेदर की स्मेल है वो मैं ईज़िली फील कर सकता था, स्मेल कर सकता था. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट ही सॉ नेक्स्ट. सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर with eyes fixed on it, would remark, what a beautiful piece. Piece mean here piece. What a beautiful piece. When I too had admired it, he would speak again, when do you want them. So students, I am not again taking the accent of German, so I am
स्पीकिंग व्हाट दे एक्चुअली वर्ड्स एक्चुअली मेंट. ठीक है, यहाँ पे लिखा है वॉन्ड, तो यहाँ पे वॉन्ड नहीं है, वॉन्ट है. सो आई बी स्पीकिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. व्हेन डू यू वॉन्ट? सो हेयर मिस्टर गेस्लर ब्रिंग्स अ लेटर एंड ही आस्क, सो it is a beautiful piece. He admire, and in return Mr. Gessler ask him that till when you want them. So let's continue from here. And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. And he would say, tomorrow fortnight. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. So now ही आस्क हिम कि आपको ये शूज़ कब तक चाहिए. तो वो कह रहा है कि एज सून एज योर कन्वीनियंट, मीन्स आपको जैसा कन्वीनियंट हो, मीन्स जब भी आप बना सको. लाइक आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू मेक मी शूज़ क्विकली, यू कैन मेक इट एंड गिव इट मी एनी डे. सो इन रिप्लाई ही से टुमारो फोर्टनाइट. टुमारो मीन्स कल के बाद 2 weeks, और फोर्टनाइट मीन्स 14 nights. 14 nights makes 2 week, कि कल से 2 week के बाद तुम ये ले जाना. एंड इवन अगर उससे पहले हुआ, आई विल आस्क माई एल्डर ब्रदर. नेक्स्ट पैराग्राफ. देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर. गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slipper going up the stair to his dreams of boots. So now, at the end, he bid a goodbye to Mr. Gessler. Bid goodbye means उसको goodbye कहा, thank you कहा. Again goodbye, यहाँ पे goodbye से नहीं कहा, again good morning wish करा. And he was moving out of the door. As he was moving out of that shop, he was again listen that the same sound made from the slipper as someone is going upstairs. तो यहाँ पे किसको रेफर करा कि मिस्टर गेस्लर वापस ऊपर जा रहे थे काम के लिए. बट यहाँ पे ऑथर ने क्या रेफर करा? लास्ट लाइन इज टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट. मीन्स ही वॉज मिस्टर गेस्लर वर सो पैशनेट कि वो सारा दिन बूट्स ही बनाते थे या बूट्स के ऊपर ही काम करते थे. तभी उसने कहा ऑथर ने कि जो मिस्टर गेस्लर हैं वापस अपने बूट्स के ड्रीम्स में ऊपर काम करने जा रहे हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई कैनॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से हिम, मिस्टर गेस्लर, द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड. यू नो, he looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, it shouldn't have creaked. So now author is remembering the day. Occasion here means यहाँ पे कोई occasion की बात नहीं हो रही, उस moment को वो याद कर रहा है author, and he is explaining to us that I cannot forget that day जिस दिन मैंने मिस्टर गेस्लर को बताया उनके बूट्स के बारे में. means that the boots he made last time was creaked. Creaked means making noise, might be of material tone, या जब old हो जाते हैं शूज़ तो वो एक साउंड बनाते हैं. तो वो कह रहे हैं कि वो जो बूट्स हैं मिस्टर गेस्लर जो आपने बना के दिए थे वो थोड़ी सी आवाज़ कर रहे हैं. सो in return मिस्टर गेस्लर looked him at the time without replying. means मिस्टर गेस्लर ने कोई रिप्लाई नहीं करा. बट ऑथर को क्या लगा कि एज इफ मिस्टर गेस्लर इज सेइंग दैट टेक बैक दोज वर्ड. विड्रॉ मीन्स टेक बैक दैट वर्ड्स, और यू कैन से कि उसको स्टेटमेंट को क्वालिफाई करें. मीन्स जो स्टेटमेंट उसने करी है माइट भी उसको रीफ्रेम करें कि ताकि इतना बुरा ना लगे. बिकॉज क्यों उसको बुरा लग रहा है मिस्टर गेस्लर को? बिकॉज कि वो उनकी आर्ट थी, वो उन्होंने जहाँ इतने पैशनेट तरीके से वो बूट्स बनाए एंड समवन इज सेइंग कि वो बूट्स आवाज़ करते हैं. तो इन रिटर्न वो कह रहे हैं कि इट शुडंट हैव क्रीक्ड. मीन्स ऐसा हो नहीं सकता कि वो आवाज़ करें. इट डिड, आई एम अफ्रेड. तो नाउ ऑथर इज सेइंग कि येस इट इज़ मेकिंग नॉइज. You got them wet before they found themselves. Means in the left corner it is written you got them wet before they found themselves. Means before using
दे माइट बी वेट। तो वेदर जो लेदर होती है जब उसको शूज़ बनाते तो इट इज़ बिट वेट और यू कैन से बिट सॉफ्ट। तो उसको पूरी तरीके से ड्राई होने देते हैं फिर वो शूज़ पहनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि माइट भी वो वेट थे आपकी यूज़ से पहले। नाउ द ऑथर सेज आई डोंट थिंक सो। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज। तो रिप्लाई कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इट वॉज परफेक्ट वेन आई यूज दैम। नेक्स्ट पैराग्राफ, एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said, I will look at them. So he was, मिस्टर गेस्लर लोअर्ड हिज आइज, जैसे अपन सोचते तो अपन आइज नीचे कर लेते, तो ही वॉज रिमेम्बरिंग कि वो बूट्स कैसे थे, कि ऐसा क्या हो गया कि वो जो क्रीक साउंड कर रहे हैं। तो ही सेड ब्रिंग देम बैक टू मी, आई विल लुक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। So let's continue from the next paragraph from here. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. So now he is saying, Mr. Gessler is saying कि कुछ शूज़ ऐसे होते हैं that are manufactured wrong from the starting, and if I cannot make them new and fix that problem, that creaking sound, I will cancel your bill and I will return your money. So from these lines we see that Mr. Gessler is so passionate that even he is believing on his art कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बूट्स ख़राब हो, या अगर वो बूट्स बना रहे हैं तो वो परफेक्टली बनाएंगे कि वो 2 वीक्स लेके बनाएंगे। सो ही इज़ वेरी वेरी डेडिकेट टूवर्ड्स हिज शू मेकिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।